Turning across to my colleague Alicia, who's on the ground as she's getting us all the updates on the Israel-Hamas conflict. 4 days and more than 1,000 lives that are lost. Alicia, if I can quickly come across to you to understand where you're standing and what you're observing around yourself. Well, Suesha, Republic is reporting from Ashkelon, and this is like 35 kilometers from the Gaza Strip. But what we have been witnessing, we'll just show you the visuals here. It was the entire building that was attacked. It was airstripped by the Hamas yesterday, and we can see in the visuals as well the condition as of now that we have been witnessing. And we'll keep talking about it, but we'll also show you the visuals that the attack that happened last evening is what we have been told. I'm also being joined with my colleague Lab, who is also live. Live will continue to show the visuals to our viewers, but if you can speak about the incident that happened yesterday, what happened at what time, and as we can see in the visuals as well, that the condition of the entire building, which has completely been gone down. So Ashkelon was a prosperous city, and it is near the beach. So many people want to live here, but the pain of Ashkelon is that Ashkelon is so near to Gaza, and so yesterday at around 1 a.m. a whole block was bombed by the Hamas. And now virtually people cannot live here. Like about 20 families need to flee the place because of the bomb. Yes, yes. And situation now in Ashkelon is that people have this big dilemma. Should they stay in the city because we have beautiful houses here? And it is one of the best cities of Israel. On the other hand, it is so close to Gaza that each and every time that person goes to a polyclinic or to the supermarket, they risk their lives. Right now, there are like no schools here in Ashkelon. It's like most of Israel. Also, we see that most places, you see hardly people. Also, the big supermarkets are quite empty. From a very hectic city, Ashkelon became a city in a war. Yes. Now we can also inform about the situation as of now, because we even been seeing police officials who have been continuously giving an advisory to the people to stay at their home, because even we can hear the voice of an explosion that has been continuously ongoing. If you can talk about it. Yes, even when we were here, we heard the booms, because what the police and also the government wants is people to be at home. Usually, most of houses in Israel, they have a shelter inside house. It is compulsory. You have no choice. You have to have a shelter in your house. Otherwise, it is illegal house, all the new houses. And usually when people are inside house, even a rocket gets into the house, people are not really hurt, or hurt but not get killed. While when they go outside to the gas station, to the supermarket, never mind what, they're in a very big risk. Now, we saw in the last wars with Hamas, which were not a big wars. They were like, usually they're like 1 2 weeks. In the last wars with Hamas, a big percentage of those who lost their lives were in a car. Sometimes the bomb was like 8 yards from the car, and still they got killed. So what the IDF and the government is asking people to try to be as much time as possible inside house, inside the shelters which are located inside the house. And we really see much less people than usually in Ashkelon. Well, yes. I will keep talking, but also will show the visuals of the situation that is we have been reporting from the ground zero in Ashkelon, where it is 35 kilometers from the Gaza border. This is the visual, the condition of a building which was it was attacked by the Hamas yesterday, and we have been continuously showing you the visuals and exclusive visuals where we have been reporting from. It's very important to see the condition that has been happening here. But yes, as Israel has rightly mentioned, and it's from the Prime Minister itself. The Prime Minister has clearly mentioned that it's our time to show them the real picture, even if they have started
the war, we are going to finish it. Yeah, Prime Minister Netanyahu said very clearly, till now, we had small battles. Now we have a war. It means that any result except the full defeat of Hamas will be a failure for Israel and for the Netanyahu government. This is the situation now. This is what has changed because of the mass killing and the murder and the kidnapping that we have seen on Saturday. We even know that the electricity, food, and the medicines, and so the supply is also going to be shut down for the Hamas. The advisory is also given, the instruction, the clear instructions has been given that they should leave Gaza because it's Israel who is going to make a retaliate. Yes. Usually what Israel made big efforts, even to avoid killing Hamas terrorists if they knew that also simply people, normal things were there. But right now it is a war. I think now the system in Israel thinks differently. The idea is to make Hamas lose this battle, to make Hamas lose this war. It means that if until now the electricity to Gaza came from Israel, and also a lot of supplies, you could see lots of lorries getting into Gaza, now Israel, also because this is what the Israeli public wants right now. They cannot see a situation that Israel is still feeding Hamas. And we should be honest with the situation because for many, many years, Israel had a question whether Hamas is the big enemy or the Palestinian Authority is the big enemy. Now, after Saturday, it is crystal clear that Hamas is here to destroy Israel, and Israel does not have any choice as far as the Netanyahu government is concerned, but to make Hamas lose this war. Well, yes, it is the same statement that has also been made by the Prime Minister this morning itself, and clearly saying, we'll also show you the visuals in and around, specifically when it comes to the Ashkelon, which is being known as the most hit city, and it is just 35 kilometers from the Gaza Strip. Here are the police officials, as we can also see, which are meeting the citizens because the main priority of the people, specifically as far as the concern of the safety of the people, the citizens are concerned, they have been looking into where the people can be at the safer place, and that is something where the Israel authority has been looking after. Lav, if you can also speak about the meeting that has been constantly taken by the Prime Minister as far as the safety of the citizen is concerned. Okay, so I think that the safety of the citizens is more located with the IDF. Okay, the IDF, our army, they say this is dangerous, here you can be, here you are not allowed to be, and so on. But what the Prime Minister is doing, and some people believe that he is a bit sluggish about it, he tries to create a unity government. Right now, we have 64 MPs in the coalition and 56 very strong opposition. It means that we had almost a civil war for the last year. And some people even say that the fact that the division in Israel was so harsh during the last year, also it is part of our situation right now. Now there is a real chance of a big coalition of about 80 to 90 MPs, a coalition of mainstream political parties and also right-wing political parties and even left-wing. And many people in Israel, this is what they wish to see, a unity government of all the Israelis that can go through a long war with Hamas. Because look, right now there is a feeling that the global community is supporting Israel. We heard Modi, we heard Biden, we heard also other leaders. We even saw the Saudi Arabia and also the Emirates. They were not supporting the Hamas. But, you know, right now what we see is the terrible pictures of the Hamas murder. In some days, we will see new pictures of the Israeli Air Force and the death toll in Gaza itself. And then
some kind of political. Well, yes, we have been witnessing that there are more and more leaders who have been coming across, and they are in support of Israel. As we know, there are more statements that has been coming across global. We'll also go to my colleague Gursimran, who has also been reporting from Ashkelon. He's been also at the same location where the place which has mostly been hit by the Hamas, which has fired the air missiles. और अटैक इतनी बर्बरता से किया जाता है, आप समझिए कि घर के परखच्चे उड़ गए हैं। मतलब कोई भी घर की ऐसी जगह नहीं है जहां पर निशान ना हो उस प्रोजेक्टाइल के, उस रॉकेट के जो दागा गया है हमास के आतंकियों द्वारा। और अब ये लोग जो आसपास के लोग हैं ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरी मौत का मंजर की कहानी जो है वो आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। तकरीबन 1000 फिलिस्तीनी जो हैं वो हमास के इस हमले में मारे गए हैं। कई जो फॉरवर्ड एरियाज़ में थे, कई जगह अबडक्शन की गई। लेकिन ये कहानी जो कि एक रिहायशी इलाके से आती है, जो कि द्योत्रा के बिल्कुल पास पड़ता है, यहाँ पर एक चीज़ बेहद ज़्यादा साफ है कि यहाँ पे बिल्कुल सामने से जो है प्रोजेक्टाइल फायर किया गया। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल ने हिट किया और उसके जो शेल्स से एक्सप्लोड हुए स्प्रिंटर जो हैं उन्होंने कितना ज़्यादा नुकसान आसपास के इलाके में किया है ये आप समझ सकते हैं। लगातार यहाँ पर आपको जो विजुअल्स हैं विजय सुरेंद्र शाह दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक पूरा बस्ता घर जो है वो यहाँ पर तहस नहस हो गया। लगातार सिविल इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और कितना ज़्यादा नुकसान है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चाहे घर की जो चीज़ें हों जिनका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे उसमें माइक्रोवेव हो, ओवन हो, हर एक चीज़ तबाह हो गई है। यहाँ पे आप देखिए कि बच्चे जो उस वक्त यहाँ पर थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि बच्चों की पार्टी चल रही थी, बच्चों के ये जूते आप देखेंगे तो ये भी यहाँ पर है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक बच्चा जो है वो इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुआ है जो अभी अस्पताल में है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ से सामने आ रही हैं ये बताती हैं कि किस तरह से बर्बरतापूर्वक हमला जो है वो हमास के आतंकियों द्वारा यहाँ पर किया गया। हमास के आतंकी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सिविलियंस को जो है वो निशाना बनाया जाए। तो इस बर्बरता पर अब हमास के आतंकी जो हैं वो उतर आए हैं कि आम नागरिकों को, मासूम बच्चों को उनके घरों में निशाना बनाया जा रहा है। लगातार यहाँ पे आपको विजुअल्स जो हैं वो सुरेंद्र शाह दिखा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बल जो हैं इजराइल फोर्सेस वो स्वाभाविक तौर पर बदला तो ले रही हैं, लेकिन चिंता का विषय ये भी है क्योंकि और कई सिविलियन इलाके जो हैं वो यहाँ पर हैं और इन सभी सिविलियन इलाकों में भारी मात्रा में लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। लोगों के लिए चिंता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सर मुझे ये बताइए, ये जो 2 मकान थे इनको टारगेट किया गया, उसके बाद आप लोगों की बाकियों की चिंताएं भी बढ़ गई होंगी कि कभी भी किसी को भी टारगेट किया जा सकता है? नहीं समझा। मतलब ये जिस तरह से मिसाइल फेंका जाता है तो आपको भी अब डर लगता है कि कभी भी कहीं भी बराबर हम भी डरता है। क्यों? हम अभी कार्ड से आता है बम पड़ सकता है इधर। वो उसको बहुत मदद किया, वो बहुत खराब आदमी उधर है। तो अब कहा गया है कि इजराइल की तरफ से कि उनको जो है खात्मा कर दिया जाएगा। खात्मा किया उसने खात्मा किया इजराइल और शांति में सब। अगले दिन उसको पैसा मिला, कतर से पैसा दिया, उसने हमला किया कल। सो आप समझ सकते हैं कि ये लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरह से फ़िलिस्तीन के बात की जाए या फिर जो गाज़ा की बात की जाए, वो रिसोर्सेज जो है वो इजराइल से ले रहा है, लेकिन इजराइल के खिलाफ ही इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। क्योंकि हमने लगातार देखा कि अब जो है एक्शन मोड में इजराइल दिख रहा है। जो सप्लाईज हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं जो कि गाज़ा पट्टी को जाने वाली, और अब साफ कह दिया गया है कि अब बड़े एक्शन की तैयारी है। लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये एक और कहानी बयां करती हैं कि किस तरह से आम लोग, चाहे बात वहाँ इनकी रसोई से शुरू की जाए जहाँ पर उस वक्त खाना बन रहा था, 2 घर यहाँ पर थे, पूरी तरह से निस्त नाबूद हो चुके हैं। ये घरों के आप देखेंगे दरारें जो आई हैं ये बताती हैं कि कब तक, ज़्यादा देर तक ये घर जो हैं वो टिके भी नहीं रहेंगे। ये घर जो हैं कभी भी तहस नहस हो सकते हैं।
तो इतनी ज़्यादा जो है मतलब हैवी बम्बार्डमेंट की जा रही है। बात जब की जाए यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो प्रोजेक्टाइल फायर किए गए थे उनकी वजह से छत में भी छेद हो गए हैं। तो इतनी ज़्यादा जो है टारगेटेड बम्बार्डमेंट की जा रही है हमास के आतंकियों द्वारा रिहायशी इलाकों में इजराइल के। तो ये दर्शाता है कि आखिरकार उन आतंकियों की, खूंखार आतंकियों की मंशा क्या है, किस तरह से वो चाहते हैं कि सब खत्म कर दिया जाए, कुछ भी यहाँ पर जीवित ना रहे, और ख़ास तौर पर आम लोग जो आम नागरिक हैं इजराइल के, उन्हें निशाना बनाया जाए। वरना ये तस्वीरें किसी आर्मी कैंप के पास की नहीं है, किसी ऐसे इलाके की नहीं है जहां पर जिसके द्वारा हमास पर रिटेलिएशन की जाती हो। तो ये जो है एक कायराना पूर्वक हमले की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें उस जगह की हैं जो बताता है कि दूर दराज के जो इलाके हैं, जो इलाका सरहद से दूर भी है, जो सरहद को लगता हुआ इलाका है, जो रोड्स वहां जाते हैं, वहां पर भी हमास के आतंकी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जाए। और कल जब यहाँ टारगेट किया गया तो 4 लोग मौजूद थे जो घायल हुए हैं, जिनमें एक जो बुजुर्ग महिला भी थी, एक छोटा बच्चा भी था। और ये उस वक्त टारगेट किया गया, बताया जाता है कि जब बच्चों का एक गैदरिंग यहाँ पर चल रही थी छोटे बच्चों की, और एकाएक टारगेट किया गया। कुछ तस्वीरें जो देखने को मिली कहीं ना कहीं वो हृदय को विचलित भी करती हैं। बच्चों के पैर, बच्चों के जूते, हर एक चीज़ मानो ऐसे पड़ी हो जैसे कि एक चंद मिनटों का, चंद सेकंड का समय भी जो है उन बच्चों को यहाँ पर नहीं मिला, ये कि वो चीज़ें जो हैं वो उनको ठीक से संभाल पाएँ। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, विजय सुरेंद्र शाह आपको दिखा पाएँ, तो कुछ और धार्मिक जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से इस मलबे में दबी हुई मिलेंगी। तो लगातार जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि कोशिश जो है वो हमास के आतंकियों द्वारा की जा रही। तो अभी जो है ये कहा जा रहा है कि ये जो घर है ये क्योंकि नीचे गिर सकता है, इसलिए यहाँ से बाहर जाना जो है वो ठीक रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ से थोड़ा हट रहे हैं, क्योंकि ये ढांचा अगर आप देखेंगे तो इस वक्त पूरा जो है वो कोलैप्स यहाँ पर हो गया है। कि कोशिश ये है कि यहाँ पर लोकल्स का कहा जा रहा है कि यहाँ पर रुका ना जाए, क्योंकि ये ढांचा कभी भी जो है ज़मींदोज़